Today, we are going to start our chapter 4 timeline and source of history. Okay, so before going to the chapter, first let's understand what we are going to learn in this chapter. First, how to measure historical time. कैसे आप टाइम को मेजर करते हो कि कितने समय से पहले, जैसे लाइक अगर आपको किसी वेट को तौलना है तो वेट को कैसे तौलते हैं, केजी में तौलते, ग्राम में तौलते, मिलीग्राम में तौलते, तो एक पर्टिकुलर आप रेफरेंस देते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अ, उसको मेजर करते हो। तो सिमिलरली हिस्टोरिकल टाइम को आप कैसे मेजर करते हो, हम ये लर्न करेंगे इसमें। सेकंड, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज जो हेल्प करते हैं हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को कैसे अंडरस्टैंड करना है, इसके कौन से सोर्सेस हैं, हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, एंड थर्ड, हाउ डिड अर्ली ह्यूमन लिव। पहले के जो ह्यूमंस थे, अर्ली ह्यूमंस जो थे, वो कैसे रहते थे, इनहेबिटेट कैसे करते थे, सस्टेन कैसे करते थे। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। Okay, now how do we learn from this? First, before going to that, हमें ये देखना पड़ेगा कि Earth has a very long history and humans occupy only a time part of the most recent one. इसका मतलब आप यहाँ देख सकते हो, like Earth का जो formation है, it is calculated approx 4.6 billion year. अप्रॉक्स अगर करेंगे तो 460 करोड़ साल पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। आउट ऑफ दैट humans have formed, here you could see homo sapiens was formed only 3 lakh year before. So 4.6 लाख करोड़ की हिस्ट्री में ह्यूमंस का कंट्रीब्यूशन ओनली 3 lakhs के बाद है। ओके, so in that we'll discuss about more key what are the activities. Here you could see 4 pictures. In that आप देख सकते हो 4 पर्सन को दिखाया गया है और what are they doing we'll see. The first is geologist. Who is the geologist? You know that we have studied, हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में कि जो फिजिकल फीचर्स होते हैं अर्थ पे, लाइक माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, सी, ओशियंस, सो इनके बारे में जो स्टडी करते हैं उनको हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। सेकेंड, पैलेंटोलॉजिस्ट। पैलेंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो पैलेंटोलॉजिस्ट उनको कहते हैं जो स्टडी करते हैं क्या, रिमेन्स ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस के बारे में, मिलियंस ऑफ ईयर्स जो ह्यूमन के रिमेन्स हैं उनको स्टडी करते हैं। लाइक आपने सुना होगा डायनासोर्स के जो हड्डी होते हैं उसको उसके बारे में पढ़ा जाता है, उनमें खोज की जाती है। ये कौन करते हैं? दीज पीपल। थर्ड इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? those who study about the human society and culture, कि पहले की ह्यूमन सोसाइटी कैसी थी, how they do live, कैसी सोसाइटी थी, कैसी कम्युनिटी थी, क्या रिलेशन था, they all study all everything about that. And the fourth is archaeologist. Archaeologist क्या करते हैं? These are the people who dig up the remaining remains, the people, plants and animal and left behind, such as tool, pot, bead. वो जो ग्राउंड है उस ग्राउंड पे गड्ढा करके उसमें से जो भी लाइक पॉट, बीड, फिगरिन, जो भी एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, उनके बारे में वो स्टडी करते हैं। आर्थ्रोपोलॉजी सोसाइटी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं एंड आर्कियोलॉजिस्ट उनकी जो फिगरिंग है, जो सब्जेक्ट्स है, जो ऑब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो उनकी स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट आवर क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू, कि हम इसमें पढ़ेंगे कि हम हिस्ट्री को मेजर कैसे करते हैं। तो देयर आर मेनी वेज टू मेजर दैट। द फेमस वन एट प्रेजेंट वी ऑल यूज द ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर हम जानते हैं कि एक कैलेंडर होता है जिसमें टोटल 12th मंथ होते हैं और जो भी ईयर 4 से डिवाइडेड होता है
दैट ईयर इज अ लीप ईयर। और अगर कोई सेंचुरी ईयर है, it has to be divided by 400, like अगर 1200 है, 1600 है, तो it is divided by 400, so it is a leap year. But let's say 1300, 1400, these are not divided by 400, so it is not a leap year. Okay, now along with that, uh, we also use Hindu, Muslim and Jewish calendar also. uh, why? For the calculating the date of festivals and auspicious event. ओके, इन वेस्ट, जो वेस्ट है वहाँ जो रेफरेंस डे, एज आई टॉक्ड अबाउट द कि वेट का जो है केजी हम मानते हैं, सिमिलरली इन वेस्ट हम कैलेंडर में जीसस क्राइस्ट के बर्थ, ईसा मसीह जिनको कहते हैं, उनके बर्थ को एक रेफरेंस पॉइंट लेके हम एक कैलेंडर बनाते हैं, एक टाइमलाइन बनाते हैं। तो कोई भी एरा जो कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद आती है उसे हम एडी कहते हैं। ओके, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉमन एरा। सिमिलरली कोई भी एरा जो कि क्राइस्ट के जन्म से पहले आया था उन्हें हम बीसी कहते हैं, यानी बिफोर कॉमन एरा। ओके, सो यू कुड सी हियर इन द पिक्चर, ये एक इमेज ड्रॉ की हुई है। नाउ here you need to understand that there is a gap, there is a catch, a discrepancy in a Gregorian calendar. What is this? Because there is no zero concept. Let's say like there is 2 BC and there is 2 CE. It is before Christ, it is common era. Now if we draw a line, then first after 2 BC come the one common era, and 1 BC, then come the one common era, 1 BC, and then so between 2 BC to 2 CE only 3 years have passed. So you could see like to measure you have to first add two numbers and then subtract one, like in that 2 plus 2 minus 1 equal to 3. So similarly you can do practice with your friends also. So you could see there is a timeline given in that picture, and in that you could see many things have been given: the end of last ice age, settlement of agriculture at 8,000 year, the pottery technology in Indian subcontinent was developed during 6,000 year, the birth of Buddha was during 582 562 BC. Sorry. So what is timeline? So timeline, it is a convenient tool to mark such event or show the sequence of dates and events covering any particular period. So timeline क्या है? It is a tool. Tool किस लिए? To mark such a event, important event, या कोई भी सीक्वेंस या किसी डेट को पर्टिकुलर पीरियड के समय में क्या हो रहा था, इसको मानने के लिए हम इस टूल का यूज करते हैं। So there are a few example in that. You could see that Buddha's date, it is 560 BC. Then comes the Jesus Christ. Before that, it is BCE, BC, and it is AD. Okay. Now, timeline also help to understand what it helps to understand the order in which the historical events take place. Like आपको जानना है कि कौन पहले आया, कौन उसके बाद आया, कौन उसके बाद आया, like there is the question always you must be asked with your friend कि पहले मुर्गी है या अंडा है। तो first understand कि timeline क्या थी, पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, उससे पहले उसकी स्पीसीज आए। ओके, सो टाइमलाइन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो आपको क्या बताते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट बताते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट और उसके बाद से पीरियड। ओके, सो ओके, नाउ
There are two definitions which we commonly use in a calendar. The first is century. Century means a period of 100 years. Like one CE, when I'm saying, it means common era. Like right now we are living in 21st century. 21st century का मतलब 2100 नहीं, 2000 से 21 के बीच का जो पीरियड है उसको हम लोग कहते हैं 21st सेंचुरी. सो वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी. Okay. The second is millennium. Millennium, what is millennium? Millennium is 1000 year. So कोई भी history जो particular like 2000 से to 3000, it is a millennium. 1900 to 200, sorry, 1900 to 2000 is a one millennium. Okay. Now Indians, there are many calendars that have been traditionally made in India. You must be knowing there are many Indian calendars also there. One of the most important calendar is Panchanga. ये पंचांगा जो कैलेंडर है, दिस वाज बेस्ड ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल डाटा, जो कि एग्जैक्टली सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स, जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं उसका एग्जैक्ट डेट, टाइम, उसके सनराइज सनसेट सब कुछ बताता था, और अभी भी बताता है. इट इज यूजफुल इन आवर इंडियन कैलेंडर स्टिल फॉर कैलकुलेटिंग द फेस्टिवल एंड many more things about the climate also it is used. So what are the sources of history? So in let us explore में एक नॉर्मल वर्क दिया गया है आप सभी को, कि जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द थ्री जनरेशन ऑफ योर फैमिली, कि आपके पेरेंट्स में फर्स्ट जनरेशन कौन था, सेकंड जनरेशन कौन था, थर्ड जनरेशन कौन था, एंड जस्ट फिल आउट दिस ब्लैंक. Okay, in that you would realize what are the sources you use, what are while knowing the history, or to find the history, what resources you use, you will realize how it is hard to exactly find the historical event. It is bit difficult, so we they take usually take many sources, refer many sources. वो बहुत सारे सोर्सेस को देखते थे और उससे फिर वो एक पोस्टुलेट करते थे, कंक्लूड करते थे, कोई चीजों को रेफर करते थे, and then slowly they conclude. So there are many this picture you could show that there are many sources through which we can know the history of our past. So here first the archaeologist sources. What are the archaeologist sources? First is encryption. Encryption means कोई words लिखे हुए हैं कहीं पे, like it could be written in manuscript, बुक्स में लिखे हुए हो, कॉपर प्लेट में लिखे हो, या नॉर्मल कॉइन्स में लिखे हुए हो. स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, मॉन्यूमेंट्स, माउंट्स यानी स्तूपा की तरह जो उठा हुआ रहता है बीच में माउंट के, जहाँ से आप आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे करते हैं और वहाँ डिगिंग करके वहाँ से पुराने सामान को एग्जैक्टिवेट करते हैं, निकालते हैं वहाँ से, एक्सकवेशन करते हैं. वो एज आई सेड कि गड्ढे करके ह्यूमन एनिमल्स के रिमेन्स, फिगर्स सब निकालते हैं. सेकंड आर्टिस्टिक सोर्स में कि उस समय पेंटिंग क्या था, स्कल्पचर्स क्या थे, अदर पैनल्स क्या थे. सेकंड फॉरेन अकाउंट. थर्ड वन वाज अ लिटरली सोच, कि उस समय किसी ने बुक लिखी हो उस सोसाइटी के बारे में, वहाँ के राजा के बारे में, उस सिस्टम के बारे में. सो लाइक इन इंडियंस एंड इट इज फॉरेन. एंड ओरल सोर्सेज भी बहुत सारे होते हैं कि एंशिएंट में ऐसा होता था कल्चर में, तो दैट्स द डिफरेंट सोर्स. ओके, व्हेन हिस्टोरियन स्टडी द किंग एंड क्वीन, सॉरी, when historians study the king and queen ancient year, a war sometimes trade that create that take care a great gather information from and many sources as they can find and consult. So whatever sources they get, वो उसको पहले consult करते हैं. Without consulting they do not postulate or come to a conclusion that this was the history. No,
they take different resources, and after consulting uh, they come to the conclusion, because many resources contradict the information कि ये information के हिसाब से ये है and the second information के हिसाब से कुछ और हो सकता है. So that's why they always consult with. It is also happen in our day to day life, like आप मीडिया पे देखते हो कि ये कुछ और लिखा हुआ है और इन रियलिटी कुछ और है, तो it create like a, it becomes a bit confusing ना. Okay, now historians are archaeologists, epigraphists, anthropologists, experts in literature, language, ये सबकी हेल्प करते हैं और हेल्प लेते हैं ताकि टू नो द एग्जैक्ट हिस्ट्री, और उसको साइंटिफिक स्टडी में कंट्रीब्यूट करते हैं. नाउ देयर आर फ्यू इमेजेस जो आप यहाँ देख सकते हो. दिस इज अ गोल्डन कॉइन ड्यूरिंग द एरा ऑफ, आई थिंक इट इज साका एरा, and then there is a picture of uh, which is engraved outside the temple, and this is our Ashok Stamp, our national emblem. Now the beginning of human history. Now we will study about the beginning of human history. So as I said in the starting, that humans, Homo sapiens have a history of 3 lakh years. Means they evolved during this period 3 lakh के around में, और our planet history is 4 460 crore years ago. So you could see that it is just a teeny fraction of Earth history. Okay, now अर्ली ह्यूमंस जो नए आए थे वो आज की दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट ही अर्थ को फेस कर रहे थे, जहां उनके पास ना कोई रहने की जगह थी, ना कोई ग्रुप थे जो उनकी हेल्प कर सकते, ना कोई फूड था, ना कोई शेल्टर, ना इंटरनेट. दे वेर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन hunting and gathering. It means they relied only on to hunt. एनिमल्स को हंट करके खाते या कलेक्ट करते जो खाने वाले, जैसे फूल हो गए, फूल हो गए, फिर बहुत सारे फल हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सो दैट दे यूज्ड टू ईट. ओके, even one more thing, that our early ancestor had a certain belief of afterlife. Afterlife means कि, a life which starts which begins after the death. So our ancestors had to believe also that uh, they get another life after the death. So these so ये जो लोग थे, these groups, they lived temporarily in camps, rock shelters, caves, communicated each other using different language, which is now, it has been lost and nobody knows. But they use fire, starting making objects. Okay, stone axes, blades, arrowroot, और बहुत सारे जो tools है, they slowly evolved. Then they started rock painting, जहाँ पे बहुत सारे 100, आपने must have heard if you are from मध्य प्रदेश, भीमबेटका cave painting. It is famous all over the world because of prehistoric paintings are found in that caves. Okay, now first crops. What were the first crops later? Now our Earth climate has gone through many changes. In the starting, it was very cold and much of the Earth was covered with ice. But as the temperature warmed up, जैसे जैसे अर्थ का जो टेम्परेचर वार्म हुआ, आइस पार्सली मेल्टेड, और इससे रिजल्ट क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग रिवर थी वो इवेंचुअली ड्रेन्ड होके ओशियन में, फिर ओशियन से उसने एक कंडीशन बनाया जिसमें ह्यूमंस, अ लिविंग कंडीशन फॉर ह्यूमंस अर्थ के लिए पॉसिबल, अर्थ में पॉसिबल हो पाया. ओके, दे ऑल आफ्टर दैट द इनहेबिटेशन ऑफ people, they started domesticated animals such as cattle, goats, which is still being
domesticated by people. Now, with more available, these community grow in size. अभी धीरे धीरे फर्स्ट इन्होंने इनके पास सेटलमेंट नहीं थी प्रॉपर, अब नाउ इनके पास एक प्रॉपर सेटलमेंट है. नाउ दिस डोमेस्टिकेटिंग एनिमल, तो स्लोली स्लोली now they settle down near to rivers, because this was not only because of the ability of river, but also because the plains near to rivers, they also are fertile, so they could grow crops there. You could see in that picture that people are doing farming, that it is she's a woman who is, I think, doing cooking practice कर रही हैं. Okay, now जैसे जैसे communities grow हुई, अ, जो लीडर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल, जो लीडर्स बने उस कम्युनिटी के, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलबिंग ऑफ पीपल, एंड एवरीवन कलेक्टिवली वर्क टुगेदर द कम्युनिटी वेलफेयर. तो एट द शुरू शुरू में कम्युनिटी वेलफेयर, राइट नाउ इंडिविजुअलिज्म इज डोमिनेंट, बट अर्लियर, लाइक अभी भी अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी में जाओगे तो कम्युनिटी वेलफेयर is preferred more than individualism. Okay, now as slowly slowly जैसे जैसे community develop हुई, then hamlet बने. Hamlet क्या होता है? A small settlement of small villages. So slowly slowly ये hamlet बनी, sizable villages बने जहाँ food, clothing, tools, they all were exchanged. फिर ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, लाइक पॉटरी कैसे बनाया जाता है, क्ले ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, मेटल्स से कैसे ये यूज किया जाता है, मेटल को बनाया जाता है. सबसे पहला मेटल जो अर्थ हिस्ट्री में, ह्यूमंस की हिस्ट्री में है, वो है कॉपर फोर. एंड द सेकंड, द आयरन वाज लेटर, इट वाज being used for for many purposes. Okay, so we will see how next to next chapter in chapter 6, that how the stage prepared for the emergence of civilization. Okay, so this was our chapter. In that, what we have studied: the historical event, what are the different ways of measuring time, decade, century, millennium, what are the sources of history, and the early human's life. Okay, so thank you for the listening. Thank you guys.